डियर स्टूडेंट, आई एम मनोहर पाटिल। आई नो दैट आप सभी लोग रोटेशनल डायनामिक चैप्टर का अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम देखने वाले बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट्स फार्मूला इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग द एमसीक्यूज ऑन नीट जे और सीटी एग्जामिनेशन। सो लेट्स वी स्टार्ट। So we have to solve the linear speed and acceleration, मतलब हमें दो फार्मूले कंप्लीट करने हैं। Of the shape is given, remember the shape is most important, that is thin ring or hollow cylinder performing the rolling motion. As we know that what is meant by rolling motion, body possesses both translation motion as well as rotational motion. Translation means it is going from one point to another point along the straight line, and rotational motion means the body is rotating about its own axis. नेक्स्ट, विदाउट स्लीपिंग, मतलब उसका स्लीप नहीं होगा, वो कंप्लीटली रोटेशनल भी परफॉर्म करेगा और ट्रांसलेशन भी परफॉर्म करेगा ऑन इंक्लाइन plane. So now this is the diagram we draw here, very simple. Which type of shape we consider? That is thin ring or hollow cylinder. So whenever the thin ring or hollow cylinder rolls down, so what happen in that case? So now whenever it is rolls down, cover the displacement S along the straight line having angle of inclination theta, h be the height. So let's we consider some notations. M be the mass of that body, mass of the ring or hollow cylinder. Next, its radius, theta be the inclination, h be the height, and last, that is s be the displacement. So बहुत simple concept है. We know that whenever the object is rolls down, what happen in that case? Its potential energy goes decreases because उसका height कम होगा, वो kinetic energy उसका बढ़ जाएगा. तो हम loss in potential energy is equal to gain in kinetic energy. According to that, we can solve the formula of linear speed. तो उसका linear speed का formula क्या आएगा? That is v equal to under root of 2gh divided by 1 plus k स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट. बहुत सिंपल फार्मूला है, उसको हम अगर और इलाबरेट करेंगे, सो वी गेट द फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज g sin theta, g for acceleration due to gravity, then 1 plus k square divided by r square. So where k is the radius of gyration. So सबसे important है आपको जो भी शेप्स दिया है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए. So which shape we have to study? Thin ring or hollow cylinder. So what is the moment of inertia of thin ring or hollow cylinder? Remember बहुत important formula है, that is I equal to mr square. So इसको हमें compare करना है with standard formula of moment of inertia. So what is the standard formula of moment of inertia in terms of radius of gyration? जल्दी बताइए. The formula is that is I equal to m k square. So दोनों formulas को हमें equating करना है. After equating we have to solve the ratio of k square divided by r square. So इसको हम equating करेंगे तो आंसर क्या आएगा? m k square is equal to m r square. So on both side mass तो same है, so mass get cancel. So what we get, that is k square divided by r square equal to 1:1. तो इसका आंसर आ गया 1. तो हमें सिंपली जो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का आंसर मिला है उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है, दोनों को सॉल्व करना है. तो हमें जो भी दो फार्मूलेज मिलेंगे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का, दोज एक्सप्रेशंस आर यूज्ड टू सॉल्विंग द नीट जेईई और सीटी एग्जामिनेशन व्हेनेवर द क्वेश्चन आस्क्ड फॉर थिन रिंग और होलो सिलेंडर, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली द बॉडी परफॉर्मिंग द रोलिंग मोशन विदाउट स्लिपिंग ऑन इंक्लाइन प्लेन. तो ये अच्छे से वहाँ पे दिया रहेगा, तो उसको अच्छे से रीड करना है, वो वर्ड्स को समझना है और अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला आपको यूज करना है. बाकी बहुत सिंपल है. चलो फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. चलो बोलो जल्दी, आपको खुद सॉल्व भी करना है. 2gh डिवाइडेड बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का आंसर आया 1. सो 1 प्लस 1 दैट इज 2. सो इसका आंसर आएगा अंडर रूट ऑफ 2gh डिवाइडेड बाय 2. सो व्हाट हैपेंड, 2 गेट कैंसल. So what we get final answer, that is velocity equal to under root of 2g. Velocity is equal to under root of gh. So this is the formula you have to remember, the most important formula. Next, what is the acceleration? So now we here substitute the value, that is a equal to g sin theta divided by 1 plus 1, so it becomes 1 plus 1 2, so that is 1/2 g sin of theta. So what we get, that is a equal to half g sin theta. So this is the most important formula for
thin ring or hollow cylinder whenever they are performing the rolling motion without slipping on the inclined plane. So take the screenshot of the given question. Remember both formulas. So remember the both formulas. If you have any doubts, you can text me. So I will answer that your questions. And most importantly, अगर अभी तक आपने इसको like नहीं किया है तो please इसको subscribe करना है, like करना है, comment जरूर करना है. आपके जो भी friends 12th का preparation कर रहे होंगे, 12th हुआ 11th हो, so please उनको बताना है. So they can study their topic, they prepare, and most importantly, you can get the good marks into your NEET JOCD examination. That is my purpose. So most importantly, please इसको like जरूर करना है आपको. So thank you very much.